Hello, all, and welcome to our another current legal affairs edition for August 8th till August 14th. So, let's see what has happened in the Supreme Court between this week. Now, these are the courses that we have. Please feel free to contact us and to follow us on Instagram and to get the mock test series, to get personal mentors 24/7 for any problem that you face. So this is our contact number, and if there's any question, kindly contact us and enroll yourselves in our classes. Now, the first case, State of Rajasthan versus Istura Ram. Now, the bench in this case was of Justice B.R. Gavai and Justice Narasimha. Now, what happened in this case is something which we know that is an established rule of evidence, which is what? That extrajudicial confession is a weak piece of evidence. So, this is exactly what the court has reiterated in this case as well. The court has said that extrajudicial confession was a weak piece of evidence, and unless there are some corroborations, the conviction solely on the basis of extrajudicial confession could not be sustained. So whenever any person is actually convicted, right? So the conviction is, um, the conviction happens only when it is proved beyond any doubt, beyond a reasonable doubt, that the person has done the crime, right? That's the principle that has to be followed. Now, extrajudicial confession is what I've pointed out the differences. So, what is a judicial confession? Judicial confession is a confession which is made in front of the magistrate or the court, right? It is done in the due process of law, and it is given under section 164 of CRPC. Now, if there is any confession of guilt which is done by a person in front of another person other than a magistrate, or other than in the court of law, then that is the extrajudicial confession. So it is a confession, right? Somebody is saying that, I killed that person. So it is a confession, but it is extrajudicial because it's not in the, front of the court or to a magistrate. But this is a weak evidence. The, According to this sentence, whatever is said to a person, you cannot convict a person. This cannot be the basis of conviction. There has to be corroboration with other evidences. If this is a sole piece of evidence, then no person can be convicted on this basis. Why? Because this does not help prove a person's guilt beyond reasonable doubt. Now comes Buduria Bai versus State of Chhattisgarh. Now, this was again a two judges bench, Justice Ajay Rastogi and Justice Ravi Kumar. What were the facts of the case? So, in this case, there was the appellant here is actually an illiterate lady. She's a senior citizen, and she was a senior citizen even at the time when the the alleged incident took place. And what is the incident exactly? That some quantity, commercial quantity of ganja, that is cannabis, was recovered from her house, and in her house there were also her children living. Right now, because it was her house also, and she was obviously then said to be in the possession of the illegal quantity of ganja, cannabis. Therefore, she was also given the punishment for the same. However, she appealed to the Supreme Court that because I am illiterate and I'm a senior citizen, I should not be given so much of higher end of the punishment. So the punishment for it is from 10 years to 20 years, right? So she has to be, because of such factors, she said that I should be given a punishment which is of lesser um, years, from 10 to 20 bracket. I should be near 10, and obviously she would plead that it should be 10. Now, what did the court say? The court said that we are of the considered view that the offence under NDPS Act are very serious in nature and against the society at large, and no discretion is to be exercised in favor of such accused who are indulged in such offences under the Act.
जो एनडीपीएस का एक्ट है वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का एक्ट है। अगर किसी के घर में कोई भी इलीगल क्वांटिटी निकलती है किसी भी ड्रग की जो मना है अंडर द एक्ट, तो फिर उस घर के हर इंसान को उसका पोजेसर माना जाएगा, पोजेसर, एंड उनको सज़ा होगी। तो कोर्ट ये कह रहा है कि इसमें हम डिस्क्रिशन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो क्वांटिटी है इलीगल गांजा की, ये अगेंस्ट द सोसाइटी है, राइट? तो इसमें कोई लीनियंसी नहीं दिखाई जाती है। इट इज़ अ मीनेस टू सोसाइटी। नो लीनियंसी शुड बी शोन टू द अक्यूज्ड पर्सन हु आर फाउंड गिल्टी अंडर द एनडीपीएस एक्ट। बट वाइल अपहोल्डिंग द सेम, द कोर्ट सेड कि हम लोग ये मानते हैं कि एक्ट का ये आइडिया है कि वो बहुत ही स्ट्रिक्ट रहेगा, ये मीनेस टू सोसाइटी है, इसीलिए हम लोग किसी को भी इसमें फेवर नहीं करेंगे। But the court said that the court cannot be oblivious to other facts and circumstances, as projected in the present case that an old illiterate lady from a rural background who was a senior citizen at the time of the alleged incident was residing in the house along with the husband and two grown up children who may be into illegal trade. तो कोर्ट ने क्या कहा कि वो एक ओल्ड लेडी हैं, वो इलिटरेट हैं रूरल बैकग्राउंड से, उन्हें नहीं पता हो सकता है कि यहाँ पे क्या रखा है या इसकी क्या पनिशमेंट हो सकती है, प्लस वो सीनियर सिटीजन भी थी, एंड मोस्ट लाइकली इट्स द टू चिल्ड्रन हो सकता है जो कि इलीगल ट्रेड में हो एंड नॉट हर। बट क्योंकि हम लोग इस एक्ट के अंडर काम कर रहे हैं विच इज़ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एक्ट, इसीलिए हम छोड़ तो नहीं सकते उनको। वी कैन नॉट से दैट यू विल नॉट बी पनिश्ड एट ऑल, लेकिन उनकी सज़ा कम की जा सकती है, और इस केस में उनकी सज़ा कम कर दी गई एंड द पनिशमेंट वॉज रिड्यूस्ड टू 12 years. So these are the considerations which are taken into account. Now Ram Nivas versus State of Haryana. Again, two judges bench, Justice Gavai and Justice Narasim. Now the court has again reiterated one of the most thorough known rules of evidence, which is what? It is well to remember that in cases where the evidence is of circumstantial nature, the circumstances from which the conclusion of guilt is to be drawn should be in first instance be fully established, and all the facts so established should be consistent only with the hypothesis of the guilt of the accused. तो इसमें कोर्ट क्या कह रहा है कि जब भी एविडेंस सर्कमस्टेंशियल नेचर के, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, यानी कि सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि समझ में आ रहा है कि इस एक पर्टिकुलर इंसान ने ये ऑफेंस किया है, तो जो सारे सर्कमस्टांसेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस बात को कंक्लूड करना चाहिए उन सारे सर्कमस्टांसेस को कि यही वो इंसान है जिसने ऑफेंस किया है, एंड कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि ये जो अक्यूज है वो गिल्टी नहीं हो। हर सर्कमस्टांस सिर्फ और सिर्फ उस अक्यूज की गिल्ट की तरफ ही पॉइंट करना चाहिए है। अगर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इतना स्ट्रॉन्ग है सिर्फ तो ही हम लोग ये कहेंगे कि हाँ ठीक है, गिल्ट कंक्लूड होती है। अगेन, द सर्कमस्टांसेस शुड बी ऑफ कंक्लूसिव नेचर। कंक्लूसिव नेचर होना चाहिए, शायद नहीं होना चाहिए, एंड और बट नहीं होना चाहिए। एंड टेंडेंसी, एंड दे शुड बी सच एज टू एक्सक्लूड एवरी हाइपोथेसिस, और हर हाइपोथेसिस को हटाने वाला होना चाहिए। मतलब कोई भी और इंसान शक में नहीं होना चाहिए, कोई भी और इंसान का शक नहीं होना चाहिए कि हो सकता है इसने ये गिल्टी हो, ये अक्यूज हो। सो एज टू एक्सक्लूड एवरी हाइपोथेसिस बट द वन प्रपोज्ड टू बी प्रूव्ड। हर तरफ से यही प्रूव होना चाहिए कि वो ही अक्यूज इज गिल्टी। In other words, there must be a chain of evidence so far complete and not to leave any reasonable ground for a conclusion consistent with the innocence of the accused. यानी कि हर एविडेंस एक चेन बनाना चाहिए, इट शुड बी अ चेन, कहीं भी बीच में गैप नहीं होना चाहिए, और वो पूरी चेन कंक्लूड ये करना चाहिए कि ये जो इंसान है ये ही इज़ गिल्टी एंड देयर इज़ नो पॉइंट जहाँ पे ये लगे कि हो सकता है ये इनोसेंट हो। अगर एक भी ऐसा पॉइंट है उस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की चेन में जहाँ पे ये डाउट भी बैठ रहा है कि इसने नहीं किसी और ने ऑफेंस किया है, तो फिर वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस established नहीं हो पाता, and a person cannot be convicted on this basis. So what did the court further say? And it must be such as to show that within all human probability the act must have been done by the accused. और कोई probability बनती ही नहीं है, सिर्फ तभी circumstantial evidence को माना जाता है, और इतना माना जाता है कि जो accused है उसको guilty
बताया जाए और उसको कन्विक्ट किया जाए. अदरवाइज ही कैन नॉट बी कन्विक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस विच इज नॉट ड्रॉइंग अ perfect conclusive chain of evidence. It is settled law that the suspicion, however strong it may be, cannot take place of a proof. सस्पिशन के बिना पे किसी को भी हम कन्विक्ट नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं प्रूव करता. और हम लोग के यहाँ सिर्फ तभी किसी इंसान को गिल्टी कहा जाता है, प्रोनाउंस किया जाता है, जब उसके अगेंस्ट जो है वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ हो गया हो कि इसी इंसान ने क्राइम किया है. An accused cannot be convicted on the ground of suspicion, no matter how strong it is. An accused is presumed to be innocent unless proven guilty beyond a reasonable doubt. हर इंसान innocent है unless हम beyond reasonable doubt उसको guilty proof करें. नेक्स्ट केस आता है XYZ वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश. इसमें क्या बेंच थी? जस्टिस चंद्रचूड़ की एंड जस्टिस पर्दीवाला की. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट केस. इसमें कोर्ट ने ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी है ट्रायल कोर्ट्स की कि जब वो रेप केसेस को या सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस को जज करते हैं तो क्या 4 चीज़ें हैं जो उन्हें दिमाग में रखनी है और उसी मैनर में उनको जो ट्रायल कोर्ट्स हैं उन्हें वो जो केसेस हैं उनको ट्राई करना है. फर्स्ट, अलाउइंग प्रोसीडिंग्स टू बी कंडक्टेड इन कैमरा. कैमरे में सारी प्रोसीडिंग्स होनी है व्हेन अप्रोप्रिएट ईदर अंडर सेक्शन 327 CRPC or when the case otherwise involves aggrieved person or other witness testifying as to their experience of sexual harassment or violence. B. Allowing installation of a screen to ensure the aggrieved woman does not have to be to see the accused while testifying, or in the alternative directing the accused to leave the room while the aggrieved woman's testimony is being recorded. यानी कि किसी भी पॉइंट पे अगर एक ही रूम में अग्रीव्ड भी है जो इंसान जो विक्टिम है और अक्यूज्ड भी है तो उनके सामने एक स्क्रीन होनी चाहिए, यानी कि एक पर्दा होना चाहिए, एक ऐसा डिवीजन होना चाहिए कि जो अग्रीव्ड है ये अक्यूज्ड को देख ना सके. क्यों? क्योंकि वो एक प्रेशर बिल्डिंग भी हो सकता है वो धमकाने की कोशिश करे, वो देख के उसको डर जाए क्योंकि दैट पर्सन जो अग्रीव्ड है उसने एक ट्रॉमा झेला है, वो उसको देख के she may go blank, she may go scared, etc. तो इसलिए ज़रूरी है कि उन दोनों के बीच में कोई भी इस तरह की स्क्रीन हो जहाँ पे जो अग्रीव्ड है वो अक्यूज को ना देख पाए. और अगर ये नहीं हो सकता है, अगर पॉसिबल नहीं है हर कोर्ट में इस तरह की स्क्रीन को इंस्टॉल करना, तो जो अक्यूज है उसको कमरे के बाहर निकाला जाए. दे कैन नॉट बी इन द सेम रूम जहाँ पे दे कैन सी ईच अदर. ठीक है. सी, ensuring that the counsel for the accused conducts the cross-examination of the aggrieved woman in a respectful fashion. जो cross-examination होगा victim का वो respectfully होगा, without asking inappropriate questions. कोई भी inappropriate questions नहीं पूछे जाएंगे जिससे वो डर जाए या उनके character पे ही उंगली उठाई जाए, especially regarding the sexual history of the aggrieved woman. Also allowing cross-examination to be conducted in a manner that the counsel for the accused submits her questions to the court, who then poses them to the aggrieved woman. यानी कि पहले वो सबमिट किए जाएंगे वो क्वेश्चंस और फिर वो उसको आंसर करेंगी. ह्यूमिलिएट नहीं करना है क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान, विच इज़ वेरी कॉमन. रिस्पेक्टफुल फैशन में क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा. जो अग्रीव्ड वुमेन है उनसे इनअप्रोप्रिएट क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, उनकी सेक्सुअल हिस्ट्री नहीं पूछी जाएगी, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन किसी भी तरह से नहीं किया जाएगा. उनको डरा धमका के क्रॉस एग्जाम नहीं कर सकते. Completing cross-examination in one sitting as far as possible. क्यों? क्योंकि बार बार उनको बुलाना, बार बार वो हैरेसमेंट झेलना, बार बार वो कोर्ट आए, बार बार वो उन्हीं क्वेश्चंस को आंसर करें. जो उनका हैरेसमेंट हुआ है, जो उन्होंने ट्रॉमा झेला है, उसको रिवाइव नहीं करना है बार बार. विच इज़ वाई इन 4 चीज़ों का ध्यान रखना है हर ट्रायल कोर्ट को while dealing in such cases. So that is all for this week. Let's see what the Supreme Court comes up with in the next week. That's all. Thank you so much. See you soon, hopefully. Bye-bye.